Good afternoon, my friends. Once again, I welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru. And this session, in this live session, I have today brought for you some very important questions. And these questions are optionless questions. And up to what extent I think that the questions having no options are actually the questions that can be called questions. Because when you have options, definitely you will try your best to get the answer out of those options only. If you have 4 options and no option is your answer, definitely you will get confused. So you have to make your brain sharp, you have to make your mind sharp to solve the questions. So I'll write the questions. Without option, you have to answer. If you have a sharp brain, you can. But very soon, we'll start giving you options. But first, you have to sharpen your mind. So I directly sit to your topic. The very first question, we are going to have the very first question. The question is very intelligent question, or you can think it's a very pleasant question because it looks to be very easy but actually it is very hard. देखने में आपको बहुत आसान ये नजर आएगा लेकिन ये आसान है नहीं. Keep inside your brains that it looks to be very simple question but actually it is not simple. So the very first question before you is, which epic is considered to be the national epic England? So first you must know that what is an epic. If you have to define an epic, simply you have to compare it to a ballad. You must say that as a short story in verse is called a ballad, in the same way a long story in verse may be called epic. छोटी सी कहानी अगर कविता में लिखी हुई हो तो उसे हम कहते हैं ballad. बट लंबी सी कहानी अगर कविता में लिखी हुई हो तो it is mostly called epic. But epic is written or composed mostly on the basis of mythology. Mostly the epics are based on mythology. The epic we are going to discuss is not of that kind, but up to some extent you can call it of that kind. So there was an epic that came to be called National Epic of England. Which epic is considered to be the National Epic of England? I give you a hint. मैं आपको एक हिंट देता हूं, आपको उस हिंट के आधार पर आंसर देना है. देखिए आप तब पहुंच पाते हैं कि नहीं. That epic is anonymous. Anonymous means अभी आंसर नहीं देने जा रहा हूं. I am giving you just a hint. That epic is anonymous. What do you understand by anonymous? When author is not known, when poet is not known, the writing is said to be anonymous. गुमनाम writing हो जाती है. जब author का पता न हो, writer का पता न हो, तब इसे हम क्या कहते हैं? गुमनाम writing. The epic we are going to discuss as the answer of this question was anonymous, means its poet
और इट्स कंपोजर इज नॉट नोन। ये इसका जो कंपोजर है वो नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, ये इसका जो आंसर है, द एपिक इज Beowulf. Beowulf. Its author is not known or its poet is not known. And this epic is supposed to be the national epic of England. It was written during dark period of Europe. It was written during dark age of Europe. It was written during Anglo-Saxon period when Anglo-Saxons and Jutes were ruling England. As you know that Angles came from Germany, Saxons came from Saxony and Jutes came from Denmark. This was the period in which Beowulf was written, but its composer or its poet is still not known. अभी भी इसके कंपोजर को कोई नहीं जानता। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है Beowulf. Beowulf is supposed to be the national epic of England. Now we move to second question. Yes. This is again very important question, and mostly when you attempt the question you commit mistake. आम तौर पे जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, यू मोस्टली कमिट मिस्टेक, आपसे मिस्टेक हो जाती है। आप मान के चलिए कि जो आने वाला एग्जाम है आपके सामने टीजीटी पीजीटी का, उसमें जो मैं आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चंस में से एटलीस्ट यूल गेट वन, एक क्वेश्चन उसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आप मान के चलिए। द सेकंड क्वेश्चन इज हु इज known as the Milton of Anglo-Saxon poetry, या इसी का दूसरा भी नाम है, हो सकता है उस नाम से आप जान जाएं, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, एंग्लो सैक्सन पोएट्री और ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। हु इज नोन एज द मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट्री और ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। नाउ योर जॉब इज, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाना है कि हु मिल्टन वॉज, कि मिल्टन कौन था। मिल्टन इज इन द कोर्स ऑफ टीजीटी। आपको पता है कि जॉन मिल्टन टीजीटी के कोर्स में है। एंड हु मिल्टन वॉज, व्हाट वाज द बिगेस्ट आइडेंटिटी ऑफ मिल्टन? मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोएट. Milton was born in 1608 and he died in 1674. He lived 66 years in this world, and his magnum opus is Paradise Lost, consisting of 12 books. इसके अलावा उनकी अगर फिजिकल लेवल पर जाकर हम कहें कोई आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी ये है दैट ही वाज ब्लाइंड एंड ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 42 इन 1652 एंड 53. ओके, तो मिल्टन की कुछ पहचान हो सकती है। एक पहचान उसमें से है दैट ही वाज ब्लाइंड एंड ही वाज अ ग्रेट पोएट। अब बताना है कि हु इज नोन एज द मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट्री और ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। हु इज सपोज टू बी मिल्टन? आपका जवाब जो है, दिस इज योर आंसर। Cademon. C-A-E-D-E-M-O-N. Cademon. Cademon is supposed to be, or Cademon is known as the Milton of Anglo-Saxon poetry. Why? Because Cademon was blind. Cademon भी blind थे. But what's the difference between Cademon and Milton? इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लाइंडनेस। अगर हम बात करें कि जो
अंधे होने का परिप्रेक्ष्य है, अगर हम दोनों को अंधा मान लें कि ठीक है दोनों में समानता थी, दोनों अंधे थे, तो क्या अंतर है दोनों में? अंतर यह है कि मिल्टन वॉज नॉट ब्लाइंड बाई बर्थ, मिल्टन वॉज नॉट ब्लाइंड बाई एस्क्रिप्शन, जन्म से अंधे नहीं थे, वाइल कैडेमोन वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, बाई एस्क्रिप्शन, ये जन्मजात अंधे थे, बाकी सब कुछ सेम है। इसलिए मिल्टन एक एंग्लो सैक्सन पीरियड में भी पाए गए, नाम तो उनका कैडेमोन था, लेकिन मिल्टन जैसे उनके पास गुण थे, इसलिए लोगों का यह मानना हो गया कि एक मिल्टन वहां भी पाया गया। तो क्वेश्चन देखिए, आंसर नीचे है कैडेमोन, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, Who is known as the father of Anglo-Saxon poetry? और who is known as the father of Old English poetry? कौन इसके पिता कहे जाते हैं? Question looks to be very easy, but at the same time it is very difficult question. Why? Because it creates a sort of confusion. एक तरीके का एक confusion create करता है। कैसे? Normally you are asked that who is known as the father of English poetry. When you are asked that who is known as the father of English poetry, simply you take Geoffrey Chaucer. But here it is a different sort of question. You have to go back in order to find answer. This is not the father of English poetry, but this is the father of एंग्लो सैक्सन पोएट्री। आपको जो टिक करना है वो एंग्लो सैक्सन पोएट्री के फादर पर करना है, हर जगह नहीं कर देना है। यस, आंसर प्लीज। इट इज अगेन कैडेमोन, आंसर इज अगेन कैडेमोन। अगेन इट्स आंसर इज कैडेमोन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंच रेवोल्यूशन took place in which year? In which year the French Revolution took place? In which year the French Revolution took place? किस साल फ्रांस की क्रांति हुई? किस साल फ्रांस की क्रांति हुई? ये देखने में आपको आसान क्वेश्चन लग रहा है, आसान है भी, लेकिन इससे संबंधित मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, जब आंसर बता लूंगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपके बहुत सारे काम आएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, तो इन विच ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस? It looks to be very easy question, but actually that's not so. Your answer is 1789. This is the year in which French Revolution took place. Now, what French Revolution was and how it impacted the world coming. जो आने वाली दुनिया थी उसको कैसे प्रभावित किया
आने वाली जो दुनिया थी उस पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा, ये अब हम इसको देखते हैं। आपका आंसर मिल चुका है दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, फ्रांस की क्रांति कब आई, 1789 में आई। आपका आंसर आ चुका है। नाउ एक क्वेश्चन इससे और जोड़ देते हैं, उसको आप देख लीजिए। What were the watchwords? देखिए यही जो वॉच वर्ड्स लिखा हुआ है ये कई तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है वॉच वर्ड्स लिखा हो सकता है आइडियल वर्ड्स लिखा हो सकता है क्लेरियन कॉल्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। What were the watchwords of the French रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आदर्श वाक्य थे वो क्या थे? ऊपर और नीचे दोनों क्वेश्चंस आपस में एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं। अब क्या पूछना चाहता है ये क्वेश्चन, सबसे पहले ये आप जज करिए। जब कोई भी क्रांति होती है, वेन एवर अ रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन दिस वर्ल्ड, जब इस दुनिया में कभी भी क्रांति होती है तो इसकी अपनी कुछ डिमांड्स होते हैं, ठीक है। बिना किसी मांग के कोई क्रांति नहीं होती है, कुछ उनकी इच्छाएं होती हैं कि ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, ठीक है, मांग होती है। तो जो मांग होती है वो क्या थी, क्या चाहते थे जो रेवोल्यूशनिस्ट थे, वो क्या चाहते थे, यही आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि देयर वर 3 आइडियल वर्ड्स, 3 आइडियल वर्ड्स थे, 3 वॉच वर्ड्स थे, 3 मांगे थी। और ये 3 मांगे कौन कौन सी थी? नंबर 1, अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आप सबके लिए तैयार रहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान होगा तो आप चाहे क्वेश्चन जैसे भी घुमा के पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर इट। कैसे कहेंगे? पहली मांग लिबर्टी, दूसरी मांग इक्वेलिटी, और तीसरी मांग थी फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी और द आइडियल वर्ड्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 जो आदर्श वर्ड्स हैं, आइडियल वर्ड्स हैं, वो आपके सामने हैं। लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण मांगे थी। बाकी और बहुत सारी मांगे रही होंगी, बट दैट वाज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंस के चीजें नहीं हैं। इज दैट क्लियर? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, after the French Revolution, who became the king of France? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब समाप्त हुआ, भाई अगर शुरू हुआ है तो समाप्त भी हुआ होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब समाप्त हुआ तो कौन था जो उसके समापन के साथ राजा बना? बहुत पॉपुलर नाम है, इट इज अ वेरी पॉपुलर नेम, बहुत पॉपुलर नाम है। आपको बताना है
कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समापन के साथ कौन राजा बना? कहां का? फ्रांस का। कौन राजा बना? चलिए मैं आपको बताता हूं। आंसर इज Napoleon Bonaparte. It's a very popular name. Napoleon Bonaparte in 1798-99, especially 99, became the king of France with the end of the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्रांति के समापन फ्रेंच रेवोल्यूशन के समाप्ति के साथ ही या फ्रांस की क्रांति के समाप्ति के साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना, या ये कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस के राजा बनने के साथ फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला आपके जो लिटरेरी सिनेरियो थे उस पर। क्यों? क्योंकि इसके समापन के साथ ही एक राइटिंग आ गई जिसे हम कहते हैं लिरिकल बैलेट्स, एंड लिरिकल बैलेट्स वाज अ जॉइंट वेंचर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, and with the publication of this for the first time, with the first edition, the French Revolution ended and Romantic age begins. So this is the answer. Next question. Question number 7. The question I am going to ask is very difficult and at the same time very important. When the questions are found to be difficult, जब questions difficult हो जाते हैं, जब questions बहुत कठिन हो जाते हैं, तो उनका importance भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत कठिन questions, if very difficult questions appear in your exam, अगर बहुत कठिन पेपर आपके एग्जाम में आ जाता है, पेपर में दिखाई देता है, तो मान के चलिए कि सबके लिए वो डिफिकल्ट होंगे, और अगर सबके लिए डिफिकल्ट होंगे तो इसका मतलब बहुत कम लोग ही उसे कर पाएंगे। अगर 100 लोगों के लिए डिफिकल्ट है तो 2 लोगों का क्वेश्चन सही होगा या 25 लोगों का क्वेश्चन सही हो सकता है, अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब हुआ कि आप महत्वपूर्ण में आ जाते हैं अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, आंसर सही कर लेते हैं तो। ठीक है, तो the question I am going to ask is really difficult. In which age for the first time actresses were introduced on the stage in England? Yes. Question ध्यान से पढ़िए। When you study the question or when you read the question attentively, you find the question is really strong and it will not be easy to be answered. आंसर आसान नहीं होगा देना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मली आप ऐसी क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं कि एक्ट्रेसेस कब इंट्रोड्यूस की गई स्टेज पर। नॉर्मली यू डोंट स्टडी सच क्वेश्चंस, बट नाउ द क्वेश्चन इज बिफोर यू, सो यू हैव टू आंसर। अब क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको आंसर तो करना ही करना है। यस, चलिए आंसर। In
restoration age for the first, लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन लिख दे रहा हूं कि आपको कहीं सेंटेंस बनाना हो, जीआईसी का मेंस देना हो तो सेंटेंस भी आपका बना रहे, ठीक है। कहीं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो जहां आपको लिखना पड़े तो आप सेंटेंस सही सही लिख लें। तो केवल रिस्टोरेशन एज लिख देते तब भी सही है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इन रिस्टोरेशन एज फॉर द फर्स्ट टाइम actresses were introduced on the stage. In England. अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। Actually, in Restoration period, Charles II was the King of England. Or you can say that Restoration period is its name only because of the restoration of monarchy in the form of Charles II. चार्ल्स II के रूप में राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई इंग्लैंड में 1660 में, जबकि आप जानते हैं कि राइट फ्रॉम 1649 टू 1660 11 years were the years of the period of interregnum. इंटररेग्नम था, इंटरवल था, और वहां कोई राजा नहीं था, कोई रानी नहीं थी, नो मोनार्क वाज देयर, इसीलिए कोई मोनार्क वहां नहीं था। इसीलिए क्या हुआ, जब चार्ल्स सेकेंड जो कि तब फ्रांस में रहा करते थे, बिकॉज उनका जो बेसिस था वो फ्रांस था, आधार जो था वो फ्रांस था, फ्रांस से उनको वापस बुलाया गया एंड इन 1660 मोनार्की वाज रिस्टोर्ड, ड्रामा वाज रिस्टोर्ड विद द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। और जब फिर से ड्रामा शुरू हुआ 1660 के बाद, तो एक स्मार्ट ड्रामा शुरू हुआ। अभी तक महिलाओं का भी रोल कौन किया करते थे, पुरुष, महिलाओं का भी रोल पुरुष किया करते थे, लेकिन फ्रांस वाज वेरी स्ट्रांग, फ्रांस टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था। तो फ्रांस ने कहा जब महिलाएं उपलब्ध हैं, व्हेन वेमेन आर अवेलेबल, तो फिर महिलाओं का रोल महिलाएं ही क्यों नहीं करती हैं। भाई पुरुषों से आर्टिफिशियल रोल कराना क्या अच्छी बात है। तो इन लोगों ने क्या किया, दे मेड द सोसाइटी स्मार्टर, इन लोगों ने सोसाइटी को और स्मार्ट बना दिया। एंड नाउ द एक्ट्रेसेस केम टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेज अंडर द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रामा। फ्रेंच टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रामा जो है उसके प्रभाव में आकर के क्या हुआ, एक्ट्रेसेस आ गई स्टेज पर। यहां एक स्टेटमेंट आपको अपने दिमाग में रख लेना है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं लिख भी देता हूं, देख लीजिए आप। बिकॉज ऑफ biological discoveries and scientific inventions, drama of restoration period moved a step forward, but now its poetic temper marred। लेकिन अब इसका जो पोएटिक टेम्पर था ये मर चुका था, अब इसमें कोई पोएटिक टेम्पर
नहीं रह गया था, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। कहने का मतलब है चूंकि साइंटिफिकली एडवांस कर गया प्ले, बायोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया क्योंकि एक्ट्रेसेस आ गई स्टेज पर, सब कुछ अच्छा था, बट प्रॉब्लम वाज वन, एक प्रॉब्लम थी कि जो पोएटिक टेम्पर था, भावनाएं जो थी वो धीरे धीरे मरने लगी। तो नाटक से जो पोएटिक टेम्पर था, इमोशनल टच था, धीरे धीरे काव्य समाप्त होने लगा। तो कुल मिला के यहाँ आपको केवल एक चीज समझना है कि जब हम टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं, जब हम टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो इमोशनली वीक हो जाते हैं। जब दिमाग ज्यादा चलने लगता है तो दिल बीमार पड़ने लगता है, यही इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said I am going to write a statement and you have to tell that who gave this statement, किसने इस स्टेटमेंट को दिया, यही आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है? Who said, देखिए ध्यान से, catharsis is the pleasurable vent of overcharged feelings. Catharsis is the pleasurable vent of overcharged feelings. यहां द के स्थान पे अ भी हो सकता है, ठीक है। तो कीप इनसाइड योर ब्रेन्स, क्या कहा, कैथारसिस द प्लेजरेबल वेंट ऑफ ओवरचार्ज्ड फीलिंग्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु सेड और हु गेव दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को किसने दिया है। यस, कि कैथारसिस जो है वो प्लेजरेबल वेंट ऑफ ओवरचार्ज्ड फीलिंग है, और आप जानते हैं कैथारसिस क्या है। कैथारसिस मीन्स परगेशन, कैथारसिस मीन्स प्योरिफिकेशन, when fake and foreign materials of your body come out just because of your weeping, then the relaxation is called catharsis or it is cathartic effect. So who said, बताइए किसने कहा है। yes, okay, I write the answer is Compton Rickett. Answer is Compton Rickett. Compton Rickett said that catharsis is nothing more than the pleasurable vent of overcharged feelings. Vent means क्या होता है? Vent means it is a kind of way, it's a geographical term. जब आपके अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा आवेशित हो जाती हैं, जब आपके अंदर इतनी भावनाएं हो जाती हैं कि ओवरफ्लो करने लगती हैं, तो जो ओवरफ्लो होता है वो किधर से भावनाएं निकलती हैं, आपके आंसुओं के माध्यम से बाहर आती हैं, और आपके आंसुओं के माध्यम से जब फेक एंड फॉरेन मटेरियल्स कम आउट एंड यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड, एंड दैट फीलिंग इज कॉल्ड कैथारसिस। वही फीलिंग क्या कही जाती है, कैथारसिस कही जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन again is very important and it has been asked many times. बहुत बार ये पूछा गया है। The question I am going to ask has been asked many times. ठीक है, जो मैं पूछने जा रहा हूं बहुत बार पूछा गया है। Who called William Wordsworth
हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइम? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कह दिया? बताइए। विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा? You know that all the romantic poets deal with sublimity because their model is Longinus. तो सब sublimity से डील करते हैं, सबकी पोएट्री में sublimity होती है, बट प्रॉब्लम इज वन, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि when sublimity is converted into ego, जो सब्लिमिटी होती है जब वो ईगो में तब्दील हो जाती है, देन दैट इज कॉल्ड इगोटिस्टिकल सबलाइम। और ऐसा मानना था उस पोएट का, जो पोएट आपका आंसर है, कि जो वर्ड्सवर्थ थे उनका जो स्टाइल था लिखने का, इट वाज फुल ऑफ सब्लिमिटी, बट it came to be converted into ego, and that's why the poet, a particular poet, called him egotistical sublime. क्या कह दिया? egotistical sublime. तो विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने egotistical sublime कहा? आपका आंसर है जॉन कीट्स। John Keats called William Wordsworth egotistical sublime. Is that clear? John Keats called William Wordsworth egotistical sublime. Why? Because sublimity is converted into ego. ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। जैसे देखिए, एक चीज होती है, अगर आप ईमानदार हैं तो अच्छी चीज है, आप ईमानदार हैं तो सबके लिए अच्छी चीज है। इफ यू आर ऑनेस्ट, इट्स गुड। लेकिन इफ यू आर इन ईगो दैट यू आर ऑनेस्ट, इट मीन्स ईगो ऑफ ऑनेस्टी, ये गड़बड़ है। आप ईमानदार हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी का गुरूर है आपको, दैट इज नॉट गुड, ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बड़ी चीज है, मतलब वो बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स बिफोर यू। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है। I am going to write a line, and that is actually an extract from a poem of a particular poet. You have to tell the name of that poet. Who said? Who said, heard melodies are sweet, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. जो म्यूजिक, जो संगीत, जो गीत, जो कविताएं हम सुन लेते हैं, हमारे द्वारा सुना गया हो, वो मीठे होते हैं, मधुर होते हैं, लेकिन जिनको हमने नहीं सुना है वो और मधुर होते हैं। ऐसा किसी ने कहा है। क्यों कहा है? बिकॉज स्टिल वी हैव अ चांस टू फिल दैट सॉन्ग विद आवर इमेजिनेशन। हम अपने कल्पना से उसमें कल्पना के रंगों को भर सकते हैं जब जगह खाली होगा। जब हमने सुन लिया एंड द वर्क हैज बीन डन, नाउ वी डोंट हैव एनी चांस टू फिल दैट पोएम विद आवर इमेजिनेशन। तो जो हमें जिंदगी में मिल जाता है वो अच्छा है, और जो नहीं मिलता है वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि स्टिल दैट इज इन आवर इमेजिनेशन एंड वी स्टिल ट्राई टू गेट इट। अभी भी हम इसको पाने की कोशिश करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इन विच पोएम और द राइटर और द पोएट हु गेव दिस लाइन, बताइए आप। There is a poem by
जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी है ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। ये देखिए, ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। यूनान का एक कलश है, उस पर बहुत सारे चित्र छपे हुए थे, जिसको देख करके जॉन कीट्स ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, कहा आर्ट इज ऑलवेज सुपीरियर टू लाइफ। दिस इज based on the theory that art is superior to because art is permanent while life is transitory. आर्ट इज परमानेंट। जो कला होती है वह स्थायी होती है, और जो जीवन होता है वो अस्थायी होता है, वो टेम्पररी होता है। जैसे आपने अपने 10 मित्रों के साथ अपनी एक तस्वीर ड्रा करके रख ली, खींच के रख ली, तो जब भी आप कभी अपने जीवन काल में देखेंगे, आपके जीवन के बाद भी अगर कोई देखेगा तो आप वैसे ही नजर आएंगे। यू विल हैव नो चेंज। व्हाई? बिकॉज आर्ट हैज नो चेंज, आर्ट इज परमानेंट। जबकि आपके जीवन में क्या होगा, आप जवानी में कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ आप जब बूढ़े हो जाएंगे, फिजिकली यू विल बी चेंज थ्रू आउट। यही उन्होंने बताया। तो अगर ये पोएम ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न है, इसमें ये लाइन मिलती है, इसका मतलब इस पोएम को लिखने वाले हैं जॉन कीट्स। तो इस लाइन को लिखने वाले हैं जॉन कीट्स। As you know that John Keats is supposed to be the most romantic poet of romantic age. romantic age के सबसे रोमांटिक पोएट थे, और ये खुद काबिल नहीं बने, ये खुद खास नहीं बने, इन्होंने एक व्यक्ति को और खास बना दिया। किसको? विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर बहुत पॉपुलर थे, लेकिन जितने पॉपुलर वो आज हैं उतने पॉपुलर नहीं थे। ही वॉज नॉट एज पॉपुलर एज ही इज टुडे, बट जॉन कीट्स मेड हिम मोर पॉपुलर देन ही ऑलरेडी वॉज। बहुत पॉपुलर बना दिया बाय सेइंग दैट विलियम शेक्सपियर हैड नेगेटिव कैपेबिलिटी। केवल इस वाक्य को बोलने से वो बहुत पॉपुलर हो गए, और आज शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी, शेक्सपियर की फेम बताने की जरूरत नहीं है। किसने बनाया? जॉन कीट्स ने बनाया। जबकि जॉन कीट्स खुद इस दुनिया में बहुत कम दिन रहे। जॉन कीट्स केवल इस दुनिया में 26 साल थे, उसके बाद वो दुनिया छोड़ के चले गए। He lived just 26 years. As you know that he was born in 1795 and died in 1821. जॉन कीट्स wanted to be a doctor. जॉन कीट्स एक डॉक्टर बनना चाहते थे, but unfortunately he became a patient. He was suffering from tuberculosis bronchitis that is said in short टीबी। टीबी के रोग से वो ग्रसित हो गए, और टीबी देन वाज इनक्योरेबल मींस इनक्योरेबल डिजीज। वो पूरी तरीके से असाध्य बीमारी थी, और अगर किसी को टीबी हो जाती थी तो मौत निश्चित थी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। जॉन कीट्स इज द आंसर। सो देखने में तो लगेगा आपको कि दीज आर ओनली 10 क्वेश्चंस, बट व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन, you find that out of these 10 questions you can create more than 100 questions, क्योंकि हर क्वेश्चन में 10-10, 12-12, 15-15 फैक्ट्स हैं, एक्सप्लेनेशन के दौरान मिलते हैं। तो अगर आप स्मार्ट हैं तो डेफिनेटली यू विल डू 100 क्वेश्चंस out of these 10 questions. So this much for today. आज के लिए बस इतना। In next live class we'll have other questions having the slide. Thank you.